Good morning, everyone. ଆଜି ଆମେ ମେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱିକ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର୍ସ କନସେପ୍ଟ ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦ ଆନ୍ସର in proper introduction, body and conclusion କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବେ ଆନ୍ସରକୁ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ 6 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ସୋ ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଟ୍ ମି ନୋ कि जहाँ भी मुझे एनोटेट करुच्ची ऑन द स्क्रीन सेटा क्लियर अच्छी कि नहीं वॉइस क्लियर अच्छी कि नहीं वीडियो क्लियर अच्छी कि नहीं एनी वन ऑफ यू कहीं भी गोटे लाइव चैट रे मते कंफर्म कर दियंतु कि ऑडियो वीडियो एंड मुझे जहाँ लिखुची जहाँ भी एनोटेट करुच्ची से गुड़ी सब क्लियर अच्छी कि नहीं देन वी विल प्रोसीड excuse me okay clear अच्छी कहउचंदी सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन क्लास मुझे फर्स्ट कहीदेवी कि जहाँ भी हमें आंसर राइटिंग सेशंस एठी हमें प्रैक्टिस करूचे कि डिस्कस करूचे आई वांट टू रिमेंबर वन थिंग कि जहाँ भी नोट्स प्रैक्टिस करूचंदी जहाँ भी आपण मानकर नॉलेज रही नॉलेज अलोन इज नॉट सफिशिएंट जदि क्लियरली ताकू पेपर रे एक्सप्रेस करि पारु नाहंती तो ठीक अछि काहे कि ना जो आमर मेंस एग्जाम रहिला it is not about how much you know but how clearly you express what you know within a fixed word limit like 150 to 250 words depending on the marks ଆଉ ଯାହା ବି ନଲେଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କନସେପ୍ଟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କନସେପଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଦେନ୍ ଯାହା ବି କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଯାହା ବି ନଲେଜ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରପର ୱେରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସଡ ଆଉ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ ଥିଙ୍କିଂ ठीक अच्छे एंड आंसर लिखिला बेले ऑलवेज यूज किसी फ्लावरी लैंग्वेज भी यूज करवा किसी दरकार नहीं इट्स your answer sheet should show your maturity not your vocabulary use simple and precise language okay and think like a policy maker not a student so don't fear mistakes do give all the tests जदि आपण माने टेस्ट नहीं चंदी तो excuse me and don't fear your mistakes जिते टेस्ट देकी एग्जाम मेन एग्जाम पूर्वरु जेते कि मिस्टेक करिवे ताहाले जाके से मिस्टेक रु सिखि परिबे एंड से सेम मिस्टेक अगेन रिपीट करिवेनी एग्जाम रे एंड सेटा केतबळे पॉसिबल हबो जदि प्रॉपर्ली मॉक टेस्ट दोथिबे निजर आंसर को एनालाइज करथिबा इवैल्यूएटर्स जे सी भी इवैल्यूएट करके दोथिबे जोठु भी हो आंसर कॉपीज इवैल्यूएट होथिबो मिस्टेक्स जणा पडुथिबो देन यू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स देन यू लर्न फ्रॉम इट दिस इज हाउ इट वर्क्स ठीक अच्छे एंड ए डिस्कशन क्लास रे क्वेश्चंस मु रीड करी एंड 15 टू 20 सेकेंड्स देवी समस्त को पर क्वेश्चन कि निजे भी रीड करी किछि क्वेश्चन को ठीक से बुझिबे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिएम्बल पॉलिटिकल क्वेश्चन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन how does it reflect the ideals and objectives of the Indian state
प्रिएम्बल रो जो सिग्निफिकेंस टी रही आमर एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताकू डिस्कस करो फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देन एटा शो करो कि हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट सेकेंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन just read the question and have a brief thinking about it. I will discuss it in shortly. आंसर को हमें एज यूजुअल आईबीसी फॉर्मेट मु आगु भी बहुत थर कही बहुत दी तीन टा गलाणी आमर डिस्कशन क्लास ऑन मेंस मॉक टेस्ट सो इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन रे ही हमें अप्रोच करबा को वी विल डिवाइड ईच एंड एवरी सेक्शन इनटू सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स starting from the introduction प्रिएम्बल उपरे क्वेश्चन अच्छी तो ब्रीफली आमे टिके प्रिएम्बल उपरे कहिबा कि प्रिएम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिला एटा कोन कुआ जाउची आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुआ जाउची बिकॉज इट एनकैप्सुलेट्स द एसेंस philosophy and purpose of the document कौन constitution रो ठीक अछि and it also act as guiding light कोथ पे for constitutional interpretation कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि भी प्रोविजन कि किछि भी तार जहाँ भी आर्टिकल्स अच्छी किछि फ्रेज टर्म्स तार मीनिंग को इंटरप्रेट कला बेले किए इंटरप्रेट करंदी कोर्ट्स से जेतोल इंटरप्रेट करंदी द प्रिएम्बल एक्ट एज द गाइडिंग लाइट फॉर इट and reflect the foundational values on which the Indian state is built. Reflect the foundational values. हैला इंट्रोडक्शन रे एतिकी रहिबो देन आमे बॉडी को जिबा कि प्रिएम्बल को फर्स्ट आइडेंटिटी कार्ड कोन पई कहआ जाउची फर्स्ट तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमर रहिला से ताको ब्यूटीफुली समराइज करिकि देइची इट समराइज्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड रो काम कोन से कोन करे जहाँ भी डॉक्यूमेंट थाए कि किछि भी थाए से तारो कोर आइडियल्स को कैप्चर करे सो आइडेंटिटी कार्ड कैप्चर्स द कोर आइडियल्स ऑफ एनी पर्सन और डॉक्यूमेंट हैला आ एठी प्रिएम्बल को एथि पई कहै जाउची काहे ये प्रिएम्बल रो कोर तार जो कोर जहाँ भी एसेंस रही ताकू कैप्चर करूची सो द प्रिएम्बल कैप्चर्स द कोर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउ कोन करूची कोथि पे आउ कोथि पे हमें आइडेंटिटी कार्ड कहि परिबा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करूची इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर रे हमर कोन कोन जाउची जदी समस्त पॉलिटी रिवाइज करथिबे जेमति कि सोवरेंटी हे गला डेमोक्रेसी सोवरेंटी बा डेमोक्रेसी बा रिपब्लिकनिज्म लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस एगुडी कोन दे फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए सब एलिमेंट्स को नेकी एंड प्रिएम्बल रिफ्लेक्ट ऑल दीज एलिमेंट्स गाइड्स द इंटरप्रिटेशन एटी दीटा मेजर सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क केसेस एटी कोट करि परिबे निज आंसर रे फर्स्ट होची बेरुबारी केस
केशवानंद भारती केस आउ ए दीटा केस रो महत्व कोन कि ए दीटा केस रो ही इट हैज रिकॉग्नाइज्ड दोस केसेस सुप्रीम कोर्ट थ्रू दीज केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड कि प्रिएम्बल होची गोटे बहुत ही गोटे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and से कौन करुची इट एड इन इंटरप्रेटिंग द एम्बिगुअस प्रोविजंस जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन रे बहुत ही एम्बिगुअस प्रोविजंस रही बहुत ही एमिति टर्म्स और फ्रेजेस रही जोटा कि एते सहजरे गोटे नॉर्मल लोक बुझी पारिबनी सो द preamble aid in interpreting the ambiguous provision of the constitution. And fourth and last point why it is known as the identity card of the constitution declares the source of authority. प्रिएम्बल समस्त देखिए इनिशियली सेटा स्टार्ट केमिति हुए वी द पीपल ऑफ इंडिया रु वी द पीपल ऑफ इंडिया देन इट गोज ऑन जो पीपल एठी रहिले एटा सिग्निफाई करे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमर रहिला इट गेट्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम इट्स सिटीजन्स सो द पीपल हियर आर द सोर्स. Second demand कौन अच्छी question रा कि how it reflects the ideals and objectives of the Indian state. Ideals and objectives. First keyword कौन sovereign. Sovereign माने हैला कि इंडिया सी तार जो internal आउ external affairs रहिला is free to conduct its own internal and external affairs. केही भी आउट माने बाहर देश होतु कि केही भी अथॉरिटी इंडिया को कंट्रोल करि परिबे नाही फॉर इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमिटमेंट्स और अफेयर्स से केमिति ताकू रेगुलेट करिवो सेटा पूरा तार इच्छा दिस इज नोन एज सोवरेंटी. ठीक अछि that India is free to conduct its internal and external affairs without the control of without any external control. आउ कौन अच्छी सोशलिस्ट. सोशलिस्ट माने कौन इट इंडिकेट्स द कमिटमेंट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज केमिति इनइक्वालिटीज कमिबो एटा होची गोटे सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड केमिति सोशल आउ इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट हबो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एगुड़िका आसुची सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे. देन सेक्युलर कहले हमें कौन बुझे सेक्युलर होची कि जिते भी रिलीजियंस अछंती कंट्री रे ठीक अछि इक्वल रेस्पेक्ट प्रोवाइड हबो टू ईच एंड एवरी रिलीजन सो द स्टेट मेंटेन्स प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस. देन हमर आसला डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक रे कौन केमिति पॉलिटिकल इक्वालिटी अपहोल्ड हबो upholding political equality, adult suffrage and representative government. Our India ro kono parliamentary or representative government it comes under the democratic principle. Now republic kono कि हमर जो head of state अछंती सीए इलेक्ट हेबे जेमती प्रेसिडेंट आमर रहिले नॉट हेरिडिटरी. हेरिडिटरी कोठी चले जेमती यूके रे रहिला ब्रिटेन रे रहिला तांकर हेरिडिटरी मोनार्क चले सेठी आमर एठी इलेक्टेड हेड. सॉरी जस्टिस. जस्टिस रे तीनटा पार्ट अछि. फर्स्ट होची हमर सोशल जस्टिस then economic justice then political justice. Core objective guiding policies रो जेमति affirmative action हैला welfare measures हैला से सब justice रे आसुची. Then last liberty equality and fraternity. ए तीनटा कोन करंती they ensure the dignity of individual. Individual and unity of nation.
बुझिला देन आमे आंसर टी को कंक्लूड करबा कंक्लूजन केमती प्रोवाइड करबा कि जो हमर प्रिएम्बल रहिला आमे देखिले कि एक्ट एज द फिलोसॉफिकल कॉर्नरस्टोन of the constitution capturing its vision and values आउ जहाँ भी आइडियल्स रहिले जहाँ भी गोल्स रहिला इंडियन स्टेट रो सी गुडी को ताको आर्टिकुलेट करूची एंड इंश्योर करूची कि जो गवर्नेंस रहिला इट रिमेन अलाइन्ड विथ द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा read the question explain the meaning and importance of the term sovereign socialist secular democratic as mentioned in the preamble just a terms गुडी करो meaning ଆଉ importance पचारिछि जोडी को preamble रे mention हिछि think about it for 15 to 20 seconds introduction preamble outline कौन करूची it is the guiding philosophy of what of our Indian constitution and ये जो terms गुडी का रहिले जेमती sovereign हैला socialist secular and democratic they reflect the core identity of the Indian state and shape the functioning of its political and governance structure political and governance structure and एमाने को हिसाब रे act करंती they act as the foundational principle फाउंडेशनल प्रिंसिपल एन्श्योरिंग कि जो जस्टिस इक्वालिटी डिग्निटी सिटीजन मानकर रहिला सेटा केमती एन्श्योर हबो ओके बॉडी रे हमें समस्त मीनिंग बुझिबा फर्स्ट सोवरेन सोवरेन हमें कहले कौन बुझू कि प्रीवियस क्वेश्चन रे भी मु कहली कि इंडिया रो जहाँ भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स रोची से गुडी को इंडिया निजे ही कंट्रोल करिबो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन ठीक अछि सो आर इम्पोर्टेंस कौन कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से बनेइबो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रे तर कौन जाउची जेमति कि नाम हैला बा ता निजर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऊपर से निजे पॉलिसी बनै परिबो एन्श्योर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल ओवर एनी फॉरेन पावर and sovereignty principle under रे कौन होची it allows India to frame its own laws जेमति कि जहाँ भी internal और external matters रहिला सी ता निज लॉ से निजे ही फॉर्म करिबो विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफियरेंस सेकेंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल सोशलिस्ट कहले हमें कौन बुझू कि स्टेट रे बा कंट्री रे जहाँ भी इनइक्वालिटीज रहिची ताकू it seeks to reduce those inequalities कोउथरे income status and
opportunities and inequalities e सबुरे कम हेले कौन हबो so by reducing those inequalities it aims for a welfare state ହେଇ ପାରିବ and ତାର ଏଟା ହେଉଛି ତାର meaning and what is the importance of socialist principles importance କଣ ରହିଲା कि redistributive policies जो ଅଛି redistributive policies को से justify करूची जेमती कि land reforms reservations social welfare schemes आउ कौन करूची आउ कौन प्रमोट करूची व्हाट इज द इंपोर्टेंस प्रमोट्स मिक्स्ड इकोनॉमी and equitable development strengthens the social justice and जो भी marginalized groups रहिले तांकर upliftment okay third secular secular कहले हमें कौन बुझू कि जो कंट्री रहिला बा स्टेट रहिला सी ता निजर किछि गोटे कोनोसी गोटे रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बोली डिक्लेयर करि परिबनी सो द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन ठीक अछि and treats all the religions equally आर तार इंपोर्टेंस कौन सेक्युलर रा माने एठी हमें बुझिले मीनिंग नाउ व्हाट इज द इंपोर्टेंस हमर जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अछि जेहेतु सब रिलीजन को से समान भाव देखुची फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो तार अच्छी आर्टिकल 25 रु 28 हे गला से ताको गारंटी करूची देन माइनॉरिटीज मान को प्रोटेक्ट करूची and promotes their communal harmony आउ कोन इंपोर्टेंस जो स्टेट रहिला से गोटे प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करी के रखिबो फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फोर्थ रे हमें डिस्कस करबा डेमोक्रेटिक मीनिंग होची कि जो लोक माने रहिले गोटे स्टेट रे बा गोटे कंट्री बा नेशन रे पावर लाइज विथ देम पावर काउ मानक पाखरे अछि लोक मानक पाखरे अछि आ से माने कोन करछन्ती से माने तांकर जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहिले से माने को इलेक्ट करछन्ती थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज and what is the importance आर importance कोन जेतेबेले से माने तांकर निजर रिप्रेजेंटेटिव्स को से निज स्वेच्छा रे इलेक्ट करछन्ती थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इट एन्श्योर्स द अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस protects the fundamental rights freedom and political equality upholds the rule of law elections and independent institutions सबु जाक जहाँ भी की टर्म्स देथिला सबुर मीनिंग और इंपोर्टेंस देखिदेले नाउ कंक्लूजन ए जो टर्म्स हमें देखिले तार मीनिंग एंड इंपोर्टेंस से गुडी को कलेक्टिवली कौन डिफाइन करूचंदी दे डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट एंड गाइड्स इट गवर्नेंस ठीक अछि
एंड दे एंश्योर कि जो इंडिया रहिला नेशन रहिला इट रिमेन्स अ जस्ट inclusive and people centric democracy grounded in equality, freedom and national dignity. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन नेशनल इनकम को डिफाइन करो देन तार वेरियस मेथड्स को डिस्कस करो ऑफ मेजरिंग इट केमिति हमें नेशनल इनकम को मेजर करूचे एंड कौन कौन सब चैलेंजेस एसोसिएट हेची विथ ईच मेथड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर 15 to 20 seconds and think about it. फर्स्ट पचारला कि नेशनल इनकम को डिफाइन करने को नेशनल इनकम कहले हमें कौन बुझू टोटल वैल्यू of all final goods and services produced within a country in a given financial year. जहाँ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एटी मन रखिबो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेट होनी कौन पे कैलकुलेट हुएनी टू अवॉइड डबल काउंटिंग ठीक अच्छे सो जहाँ भी टोटल वैल्यू रहिला फाइनल गुड्स आउ सर्विसेज रो तार टोटल वैल्यू जोटा कि गोटे फाइनेंशियल ईयर भितर प्रोड्यूस होची ताकू हमें कहूछु नेशनल इनकम एंड थ्रू नेशनल इनकम आम कौन कौन जानिया को पाई था फर्स्ट तो कंट्री रो इकोनॉमिक हेल्थ केमिति अछि जेमति कि ग्रोथ ट्रेंड्स तार कौन रहिला एंड पॉलिसी डिसीजन से केमिति नउची त तार इकोनॉमिक हेल्थ एथ्रू जणा पड़े इन इंडिया नेशनल इनकम ताको किए एस्टिमेट करे इट इज एस्टिमेटेड बाय एनएसओ बा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम तो कहली मु जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रो टोटल वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर किंतु ताको हमें मेजर केमदी करूचे फर्स्ट ताको मेजर करबा को तीनटा मेथड अप्लाई करा जाए फर्स्ट मेथड होची प्रोडक्शन मेथड प्रोडक्शन मेथड रे कौन हुए इट मेजर्स द वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोडक्टिव सेक्टर्स जिते भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स अछंदी हमरो जेमदी एग्रीकल्चर हैला इंडस्ट्री और सर्विसेज सी कौन वैल्यू ऐड करूची हैला मेजर्स द वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ठीक अछि एंड चैलेंजेस कौन रहुची एथरे कि आमर जो लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रहिला जो एक्चुअल डाटा कलेक्शन टा रहुची कहीं ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत गुडे प्रोविजंस रे आसुनी सो द लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मेक्स द एक्यूरेट डाटा कलेक्शन वेरी डिफिकल्ट आउ कोन चैलेंज अछि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर
गोटे चैलेंज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कहीं एगुड़िकर प्रॉपर रेकॉर्ड सेमती किछि नाही and issues of estimating intermediate goods and avoiding double counting. Next method कौन income method. And income method रे केमिति calculate हुए calculates the total income earned by factors of production. एठी हमें factors of production को consider करि थाउ. Factors of production कौन रहिला जेमति कि इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन इनकम से माने अर्न करंती जेमति वेजेस हला रेंट अर्न करंती इंटरेस्ट अर्न करंती एंड प्रॉफिट अर्न करंती these are the income earned by the factors of production and challenge कौन रही छी ए मेथड रे फर्स्ट इज बहुत गुड़े एमिति वर्कर्स अछंती जो माने कि एबे भी इनफॉर्मली अर्न करंती और तांकर इनकम जो थाए सेटा अनरिपोर्टेड जाए सो देयर आर मेनी वर्कर्स इन इंडिया हु अर्न इनफॉर्मल और अनरिपोर्टेड इनकम्स देन जो इनकम को एक्सेस करिबारे जो सेल्फ एम्प्लॉयड माने रहिले स्मॉल बिजनेस जो माने चलाउ जदी डिफिकल्टी आसे सो देयर इज परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द इनकम्स of self-employed and small businesses. And एबे भी सेमती बहुत रिलायबल डाटा अवेलेबल नहीं ऑन मिक्स्ड इनकम्स स्पेशली इन रूरल एरियाज रे जो मिक्स्ड इनकम चली छी ता ऊपर सेमती किछि एबे भी रिलायबल डाटा नहीं सो देयर इज लैक ऑफ रिलायबल डाटा ऑन mixed incomes especially in rural areas. Third method amar kono third and last method expenditure method. Expenditure method कहले हमें कौन बुझू it sums up the spending जहाँ भी spend होची तांकर sum on consumption investment government expenditure and net exports. It sums up the spending on consumption investment government expenditure and net exports. Challenges कौन अछि in the expenditure method first the जो household consumption को estimate accurately करिया बेले difficulty आसे कहेंगे ना से थिरे unreported cash transactions हुए first challenge होची household consumption ठीक अछि estimating household consumption accurately is difficult कहेंगे ना due to its unreported cash transactions then आउ challenge आसे private investment measure कला बेले measuring private investment सेटा normally complex due to its incomplete corporate data then frequent revisions in government expenditure classifications affect the consistency. Government expenditure classification रे बार बार जेते बड़े frequently सेटा revise हुए सेटा consistency को further affect करे conclude कौन करिबा आमे जहाँ भी जो तीनटा मेथड ऊपर पढ़िले those three methods they provide comprehensive insights
ଯେତେବେଳେ इंडिया स्ट्रक्चरल चैलेंज फेस करे जेमति कि लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी हे गला इनएडिक्वेट डाटा सिस्टम बा मेजरमेंट गैप्स हे गला those three method provide comprehensive insight. Okay, so strengthening digital records, improving the surveys, formalizing the economy, एगुड़िक क्यारी आउट हेले कौन हम इट विल एनहांस द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स. Okay, fourth question. Explain the difference between GDP and GNP. Why GDP is considered better indicator for measuring economic performance? GDP और GNP भीतर difference कुह explain करो. First demand of the question. Then why GDP is considered better indicator for measuring economic performance? GDP and GNP आमे कोथरे नहीं थाउ. They are the key macroeconomic indicators. These are the key macroeconomic indicators and they are used to assess the economic strength of a country. And both GDP और GNP through रू आमे value of production measure करी थाउ. दीटा जाको यूज करिकी we measure the value of production. They differ in terms of ownership and location. कोथरे differ करंती in terms of ownership and location. Therefore तांकर जो distinction टाकू study करिबा important for evaluating the national economic performance. First, difference between GDP and GNP. GDP कहले कौन बुझू कि गोटे कंट्री रो टेरिटोरियल बाउंड्री भितरे जहाँ भी फाइनल गुड्स and services produce हुए within the geographical boundary or territorial boundary of a country during a given year ताकू आमे कहिताउ GDP. ठीक अछि. and एथिरे कौन कौन include होची? It includes the output of both foreign and domestic entities. कहीं गोटे कंट्री जोग्राफिकल बाउंड्री भितर केवल निजर डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस बा एंटिटी न थिबे बहुत गुडे एमएनसीज भी थिबे फॉरेन कंपनीज फॉरेन नेशनल्स भी आसी काम करथिबे तो समस्तंकर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द जहाँ भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज से माने प्रोड्यूस करछथि तार मॉनेटरी वैल्यूज को आमे जीडीपी रे नै थाउ. सेम जीएनपी कौन? जीएनपी रो फुल फॉर्म होची ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एटा कोड मेजर करे. इट मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स. एथि हमें बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन नौचु. डोमेस्टिक मान नेशनल एंड फॉरेन नेशनल्स मानको भी नौचु. एथिरे ओनली नेशनल्स मानकर गुड्स एंड सर्विसेज जो मान जहाँ से माने प्रोड्यूस करछन तार टोटल वैल्यू मेजर होची इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन. जरूरी नहीं से माने कोठी प्रोड्यूस करछन से इंडिया रे करंतु कि बाहर देश रे करंतु. सो इट एड्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. व्हाट इज द नेट फैक्टर इनकम? जीएनपी रो फार्मूला हला जीडीपी. जीडीपी हमें जानले कोन?
प्लस नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम होची कि इंडियंस माने जहा अब्रोड रे जहा इनकम अर्न करूचंती ताधरो जदी आमे फॉरेनर्स माने जो इनकम से माने इंडिया रे अर्न करूचंती ताकू डिडक्ट करदबा ताहले हमकु मिल जिवो नेट फैक्टर इनकम। ओके, सो एठू आमे कोन जानले जीडीपी होची हमर गोटे लोकेशन बेस्ड मेजर एंड जीएनपी इज ओनरशिप बेस्ड मेजर। व्हाई जीडीपी इज बेटर? जीएनपी ठारू जीडीपी बेटर कोन पाई? फर्स्ट, it reflects domestic economic activity। ये गोटे इकोनॉमी रे जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज चली ताको शो करे। इट शोज हाउ प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी इज विद इन इट्स ओन टेरिटरी। सेकेंड, रेलिवेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग जेमति कि हमर फिस्कल हैला मॉनेटरी बा ट्रेड पॉलिसी जोडा कि ऑपरेट ही होची हमर डोमेस्टिक बाउंड्रीज भितरे, मेकिंग जीडीपी मोर एप्लीकेबल। कैप्चर्स डोमेस्टिक जॉब क्रिएशन। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंडिकेट करूची एंड बिजनेस एक्टिविटी को भी इंडिकेट करूची इनसाइड द कंट्री। ग्लोबल कंपैरेबिलिटी। इंटरनेशनल एजेंसीज हला जेमति आईएमएफ बा वर्ल्ड बैंक से माने कोन करंती जीडीपी को एज एन इंडिकेटर नियंती फॉर देयर ग्लोबल रैंकिंग्स। एंड फाइनली, बेटर फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस। हैला जो क्वार्टरली जीडीपी डाटा हमर रिलीज होची Q1 Q2 Q3 Q4 चारटा क्वार्टर बाय जो जीडीपी डाटा हमर रिलीज होची सेथिरे ग्रोथ ट्रेंड्स को बेटर ट्रैक करा जाउची एंड रिसेशनरी प्रेशर को भी मोस्ट इफेक्टिवली हैंडल करा जाउची। एक्सक्यूज मी। कंक्लूजन, एठू हमें देखले कि जेतेबेले कि हमर जीएनपी हाइलाइट करूची जहां भी इनकम हमर नेशनल्स माने अब्रोड जाई कि कमाउचंदी अर्नड बाय द नेशनल्स अब्रोड कमांदु कि इंडिया रे कमांदु, जीडीपी मोर accurately reflects the real economic performance and productive capacity of the domestic economy। हैला, hence it remains perfect benchmark for growth assessment and policy formulation। बुझेला? नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल जीडीपी कहले हमें कौन बुझू आउ सेटा नॉमिनल जीडीपी रो केमिति डिफरेंट। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट डिमांड, व्हाट इज रियल जीडीपी, how it is different from the nominal GDP, discuss the significance of GDP deflator in this context।
व्हाट इज रियल जीडीपी? प्रीवियस क्वेश्चन रे तो आमे देखिले कि जीडीपी इज अ की इंडिकेटर एंड सेटा कोन पे मेजर यूज करा जाए टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री. हाउएवर कंट्री रे सबुबले जिनस गुड़िक जहाँ भी फैक्टर्स अच्छे से गुड़िक सबुबले परफॉर्मेंस स्मूथ न थाए. हाउएवर जो इन्फ्लेशन हमर रहिला इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम. एंड ईयर ऑन ईयर आमर कौन रियल ग्रोथ होची कना ग्रोथ सांगरे इन्फ्लेशन भी गोटे फैक्टर रही. To measure the real growth, to separate the real growth from the price changes बा inflation जहाँ को हमें कहूची कि deflation भी हो, इकोनॉमिस्ट माने कौन यूज करती? रियल जीडीपी यूज करती. रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर्स. এই ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତି. ଦେନ୍ ଦେ କମ୍ ଟୁ କି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇୟର ଅନ୍ ଇୟର ବା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବେସିସରେ କ'ଣ ରିଅଲ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି. What is real GDP? Real GDP कहले हमें कौन बुझो? Real GDP होची total value of all the final goods and services जोड़ा कि गोटे country रे produce होची adjusted for inflation. ठीक अछि. And एगुड़ी को calculate केमिति करा जाए? Calculated using constant base year. Base year prices. Okay. It reflects the actual increase in the production, not changes in prices, and useful to compare economic growth across the years. Difference between real GDP and nominal GDP. Real GDP आमे एठी जानले real GDP कोन? Then nominal GDP होची calculated at current price. रियल जीडीपी केमिति कैलकुलेट हुए? कांस्टेंट प्राइस ईयर कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस को कंसीडर करिकी एंड नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट हुए करंट ईयर प्राइसेस को कंसीडर करिकी. एंड जेते करंट ईयर प्राइसेस को माने कंसीडर करछन्ती जहां भी इन्फ्लेशन बा डिफ्लेशन होची कंट्री रे सेगुडी को भी इथरे इंक्लूड हे गला. तो जेतेबेले से माने इन्फ्लेशन बा डिफ्लेशन ए सब फैक्टर्स को अलगा कले नाही तो अल्टीमेटली जो ग्रोथ हबो इट विल शो हायर ग्रोथ इवन इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन हैज नॉट इंक्रीज्ड. And real GDP, they are calculated at constant prices, removes the impact of inflation, and provides more accurate picture of economic growth. And तांकर की डिफरेंस कौन रहिला कि जो नॉमिनल जीडीपी अछि इट इज केति की क्वांटिटी रे प्रोड्यूस हेछि इनटू करंट प्राइसेस एंड रियल जीडीपी क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइसेस. ओके. जीडीपी डिफ्लेटर. What is GDP deflator? GDP deflator calculate करिवार गोटे फॉर्मूला अछि. I will come to it कि GDP deflator रो importance कोना. First फॉर्मूला समस्ते मने रखंतु कि nominal GDP by real GDP
into 100 एटा होची जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करिवार फॉर्मूला एंड जीडीपी डिफ्लेटर इंपोर्टेंस कोन कि से ओवरऑल इन्फ्लेशन को मेजर करे फॉर द एंटायर ऑटोनॉमी फॉर इकोनॉमी सॉरी ओवरऑल इन्फ्लेशन इट मेजर्स द ओवरऑल इन्फ्लेशन अनलाइक जो सीपीआई आमर रहिला बा होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई रहिला से माने कोन करंती लिमिटेड बास्केट को ही मेजर करंती किंतु जीडीपी डिफ्लेटर इट मेजर्स द ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इट हेल्प्स कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ଯେତେବେଳେ ଓଭରऑल इन्फ्लेशन ही जीडीपी डिफ्लेटर मेजर କରିଦେଲା ତାହେଲେ नॉमिनल जीडीपी ରୁ रियल जीडीपी ର कन्वर्जन बहुत इजी हो जाए इट हेल्प्स देम कन्वर्ट indicates whether GDP growth is driven by price rise or real output expansion जेतेबेले इन्फ्लेशन होची कि डिफ्लेशन होची जीडीपी डिफ्लेटर थ्रू रु सेटा सेग्रीगेट हे गला अलगा हे गला मेजर करा हे करी तो सेटा एक्चुअली शो करे कि जहां भी हमर जीडीपी ग्रोथ देखौचंदी सेटा एक्चुअली प्राइस राइज जोगु राइज इन प्राइसेस और रियल आउटपुट एक्सपेंशन ओके एंड तो एथिरे कौन हुए पॉलिसी मेकर जो माने रहिले तांको हेल्प हुए टू डिजाइन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड फिस्कल स्ट्रेटजीज कंक्लूजन रियल जीडीपी आमे देखिले कि से गोटे क्लियर पिक्चर शो करूची इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रो बाय रिमूविंग इन्फ्लेशन ओके आ जो जीडीपी डिफ्लेटर रहिला ई जो रिमूविंग इन्फ्लेशन रे जीडीपी डिफ्लेटर जो रहिला से गोटे सेंट्रल रोल प्ले करूची इन दिस प्रोसेस सो इट इज वेरी वाइटल फॉर द एक्यूरेट ग्रोथ असेसमेंट एंड इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग excuse me how did Vande Mataram influence the Swadeshi and nationalist movements in colonial India? Discuss the context in 150 years of its composition. वंदे मातरम कहा द्वारा कंपोज करा जाइछि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in 1875 and कोथरे एटा मेंशन हेछि in his novel आनंद मठ 1882 रे जोटा पब्लिश हेतिला and it has became one of the most powerful cultural and political symbols of India's freedom struggle कहीं ना सेटा एबे 150 years complete करिछि तार जो historical role टा रहिछि in inspiring anti colonial consciousness सेटा एथि पई कि significant हे जाइछि
Vande Mataram as the cultural spark of nationalism. First ଆମେ ଦେଖିବା କି କେମିତି ସେ ଗୋଟେ cultural spark produce କରିଛି of nationalism. जो वंदे मातरम सॉन्ग टा रहिला, it is a blend of patriotism and spiritual imagery. जो थरे कि हमर जो मदरलैंड रहिला से it portrays the motherland beautifully as a divine figure and it helps create emotional unity. इमोशनल यूनिटी को मान भितर जो डाइवर्स हमर लिंग्विस्टिक बा रिलीजियस और रीजनल ग्रुप रहिले इट हेल्प्ड क्रिएट एन इमोशनल यूनिटी अमंग देम became a cultural weapon against the colonial psychological subordination. Role in Swadeshi movement 1905 to 8. रोल कौन थिला स्वदेशी मूवमेंट रे फर्स्ट तो जो एंटी पार्टीशन एजिटेशन थिला बेंगल रे वंदे मातरम इट बिकेम द रैलिंग क्राई ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बेंगल जो बहुत सेक्शंस of the population जेमती स्टूडेंट्स हे गले लॉयर वुमेन बा वर्कर्स दे शाउटेड द स्लोगन ड्यूरिंग द मार्चेस कहीं ये गोटे रैलिंग क्राई हिसाब रे प्रूफ हैला बॉयकॉट्स पिकेटिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ शॉप्स ए स्लोगन टा यूज हैला वंदे मातरम. So the song symbolized self-reliance, boycott of British goods, revival of indigenous industries. Okay, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज माने रहिले दे बैंड इट्स पब्लिक सिंगिंग से मान तो आको बैन ही करी देले कि पब्लिकली आको कहि माने गाई हो बने वंदे मातरम इन बंगाल व्हिच फर्दर स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. तो जो आमर नेशनल स्ट्रगल रहिला बा फ्रीडम स्ट्रगल रहिला वंदे मातरम रो इन्फ्लुएंस कोन रछि इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल एट लार्ज जमती जो लीडर्स रहिले आमर अरविंदो घोष लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल से माने कौन कले वंदे मातरम को यूज करके क्राउड्स मान को मोबिलाइज कले. एंड ये आउ कौन प्रोवाइड करतला इट प्रोवाइडेड मोरल करेज टू रेवोल्यूशनरीज एंड पार्टिसिपेंट्स जो माने कि मास मूवमेंट रे पार्टिसिपेट करतले जेमति कि हमर मास मूवमेंट जेमति नॉन कोऑपरेशन हे गला बा सिविल डिसोबीडियंस हे गला incorporated into congress sessions and demonstrations. डेमोन्स्ट्रेशंस तो जिते बड़े कांग्रेस रे ही एटा इनकॉर्पोरेट हे गला वंदे मातरम सी फर्दर इवॉल्व हे गला इनटू अ नेशनल चैंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके तो आमे एठू कोन कंक्लूड कले कि ओवर 150 इयर्स Vande Mataram, it has transcended literature to become the symbol of the emotional nationalism.
इमोशनल नेशनलिज्म एंड ये कौन कला यूनिफाइड पीपल इंस्पायर्ड sacrifice fueled collective action during the Swadeshi freedom movements. Okay, and जो legacy रही वंदे मातरम रो it will remain a reminder of India's cultural unity and spirit of self determination. तो ये आज लास्ट क्वेश्चन थिला आई होप समस्ते मॉक टेस्ट मु जहाँ फर्स्ट कहली समस्ते से हिसाब रे निजर नोट्स बनैबे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिवे एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट जहाँ भी डिस्कशन क्लास रहिबो सेटा आमे परे डिस्कस करिबा सो आज 6टा ही क्वेश्चन थिला दैट इज इट फॉर टुडे सो थैंक यू फॉर वाचिंग